कोरियन टोस्ट स्ट्रीट स्टाइल बन रहे हैं यूजिंग एग्स एंड कैबेज और आई एम एडिंग ग्रीन स्प्रिंग अनियन और इसके अंदर कुछ जा रही है कैरेट, सब्जियां डालनी है क्रंची टेक्सचर वाली, तो हो जाएगा जबरदस्त सैंडविच या स्लाइस या टोस्ट। आपके टी टाइम के लिए एंजॉय करें, बच्चों की किड्स पार्टी के लिए आइडियल है, टिफिन बॉक्सेस के लिए आइडियल है और बच्चों के स्कूल बॉक्स में भी। और आप इनको एज अ स्नैक दे सकते हैं बिफोर योर मेन कोर्स पार्टी इवेंट, या फिर आप हाई टी के लिए इन्हें सेलेक्ट करते हैं। रमजान आ रहे हैं, जबरदस्त रहेंगे ये हमारे कोरियन एग सैंडविचेस विद वेजिटेबल्स। Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you will be quite well, taking much care of you in winter season in Pakistan. December है और it's quite cold. Protect yourself, energy boost, dry fruits खाइए, एनर्जी बूस्टिंग होती है इनसे। डेट्स खाएं और सूप पिए, वार्म रखें अपने आप को, होममेड कंफर्ट फूड खाएं और ठंड में जाने से अवॉइड करें, ठीक है जी। ऑरेंजेस खाएं सर्दियों में बैठ के। हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सीजन टू स्टे हेल्दी। तो मैं आज आपके लिए ला रही हूँ कोरियन स्टाइल एक एग की हम एक बना रहे हैं, सैंडविच कह लें या टोस्ट कह लें, क्योंकि कोरिया में इनको टोस्ट बोला जाता है। स्ट्रीट स्टाइल फेमस स्नैक है, आप सपर में एंजॉय कर सकते हैं या टी टाइम पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। तो बन रहे हैं हमारे चैनल पर ये कोरियन स्ट्रीट सैंडविचेस। कौसर अलवी लाइफ स्टाइल पर जो न्यू कमर्स हैं उन सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं, जिससे मिलती है हमारे लिए मोटिवेशन। और हर काम के लिए मोटिवेशन कितना जरूरी है, यू नो इट क्वाइट। रहमानिर्रहीम। एग सैंडविचेस कैबेज वाले बनाने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली आई हैव सम फ्रेश कैबेज, ग्रीन अनियन, 1 कैप्सिकम या बेल पेपर और ये कैरेट्स हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास फ्रेश ब्रेड आई है। कोशिश करें कि आप जो है ना सैंडविच बनाने के लिए फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल करें, फ्रिज की रखी हुई ब्रेड इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ सॉसेज जाएंगी, देखिए इसमें से मैं 3 एग्स ले लूँगी, 3 हैं, इनको बीट करते हैं। तो चलिए जी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। First of all, and I am using olive oil, friends. You can use butter or ghee or whatever you like.
माई कोरियन स्ट्रीट स्टाइल कैबेज सैंडविचेस आर डन। इतने मजेदार चीजी गर्मा गर्म सैंडविचेस हो, साथ कॉफी का कप हो, तो विंटर्स को कौन एंजॉय नहीं करेगा फ्रेंड। आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। सॉवर, क्रंची, टेस्टी, और ऑमलेट का तो अपना ही मजा है, और वेजिटेबल्स का क्रंच हो। आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, एक्सक्यूज मी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन एनी अदर अपडेट। सैंडविचेस आपको कैसे लग रहे हैं? आई होप यू लाइक माई रेसिपी, एंड इफ यू लाइक डोंट forget to comment and subscribe, like and share my video. See you next time. Bye.